आज आम सेक्शन 1 पढ़ा जोटा आमर चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी रे अच्छी। सेक्शन 1 आमर कहूँ सर्ट टाइटल एक्सटेंड एवं एप्लिकेशन विषय रे। सबसेक्शन 1 दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023। Subsection 2 it shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this संहिता। या माने होची कि जेबे आम सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए सेबेटू यही एक्टा एप्लिकेबल हबो। जेमती एबे हमर 2024 1 जुलाई रु यही एक्ट एप्लिकेबल हो जाइए, किंतु एथिरे जदि अलग किसी प्रोविजन ऐड करा जाए ताले तापाई कि अलग सब डेट्स रहिबो। Subsection 3 every person shall be liable to punishment under this संहिता and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India। या माने होची एवरी पर्सन सबू लोक पनिशेबल हेबे यही संहिता हिसाब रे अलग कौन सी जिनस पे नहीं कौन पे हेबे जदि से माने किछि एमिति एक्ट करूचंती किंबा ओमिशन करूचंती जोटा यही संहिता विरुद्ध रे जाउची ताहले से माने भारत भितर ही यही प्रोविजन हिसाब रे गिल्टी हेबे। Subsection 4 any person liable by any law for the time being in force in India to be tried for an offence committed beyond India shall be liable with according to the provisions of this संहिता for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। Subsection 5 the provision of this संहिता shall also apply to any offence committed by clause A any citizen of India in any place without and beyond India, clause B any person on any ship or aircraft registered in India whether it may be clause C any person in any place without and beyond India committing offence targeting a computer resource located in India। Explanation in this section the word offence include every act committed outside India which if committed in India would be punishable under this संहिता। तो आज आम सेक्शन 1 पढ़िले, आम नेक्स्ट एपिसोड रे सेक्शन 2 आलोचना करिबा।